नमस्कार। एमएमआर की वीडियो सीरीज में आज सेकंड वीडियो में जिसमें चैप्टर 2 रिटर्न नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। उसमें मैं रथिन विश्वास आप सबको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की ओर से वेलकम करता हूं। एमएमआर में फर्स्ट चैप्टर का वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख लिए। अभी से इस वीडियो में सेकंड चैप्टर रिटर्न नोटिस एंड रिकॉर्ड्स जिसमें रेगुलेशन 3 से लेके रेगुलेशन 10 तक हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। रेगुलेशन 3 में है नोटिस ऑफ ओपनिंग, 4 में है क्वार्टरली रिटर्न्स, 5 में है एनुअल रिटर्न्स, 6 में नोटिस ऑफ अबेंडेंट और डिसकंटिन्यूअंस, 7 notice of reopening, 8 changes of ownership and address etc. 8A appointment of agent, 9 notice of accident and 10 notice of disease। ये रेगुलेशन शामिल है। आइए डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। नोटिस ऑफ ओपनिंग, the notice required by Section 16 of the Act shall be submitted in Form 1 of the first schedule। जो सेक्शन 16 के हिसाब से कोई भी माइन ओपन होने से जो नोटिस देना है वो फॉर्म 1 में, जो फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्म 1 है उसमें देना है और उसका कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करना है। Form shall accompanied by a plan showing the boundaries of the mine। इसमें फॉर्म 1 के साथ एक प्लान सबमिट करना है जिसमें माइन बाउंड्री शामिल है, shaft और opening of the mine, ट्रांजैक्शन और revenue pillars and other prominent and permanent surface features, ये सब के साथ ये प्लान सबमिट करना है। Provided that in respect of a mine which has already been opened, such a plan shall be submitted within 60 days of come into force the METALLIFEROUS Mines Amendment Regulation 1985। अगर जो माइंस ऑलरेडी ओपन किया है उस माइंस का ये प्लान सबमिट करना है 60 डेज के अंदर, जब से ये मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 1985 इन्फोर्स हुआ। Provided further that if boundary of the mine is changed as per sub regulation on of regulation 3, a plan showing the boundaries shall be submitted within 7 days of said change। अगर चेंज होने से माइंस बाउंड्री अगर चेंज होता है तो उसको 7 दिन के अंदर उस प्लान को सबमिट करना है। When a mine has been opened, the owner, agent or manager shall forthwith communicate the actual date of opening to chief inspector and to regional inspector। जब माइंस ओपन होता है तो उसके ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा एक्चुअल डेट ओपनिंग की चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को बताना है। नेक्स्ट क्वार्टरली रिटर्न, on or before 20th day of January, April, July and October in every year, the owner, agent or manager shall submit to chief inspector and regional inspector correct returns in respect of preceding quarters in Form 2 of first schedule। अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर का 20 तारीख से पहले, इससे पहले वाला क्वार्टर की जो रिटर्न है वो चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर के पास फॉर्म 2 के अंदर भेजना है।
Annual return on or before 20th day of February in every year, the owner, agent, or manager shall submit to the district magistrate and the chief inspector annual return in respect of preceding year in Form 3 of first schedule. 20 फरवरी से पहले फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न पहले वाला लास्ट ईयर की एनुअल रिटर्न भेजना है. If a mine abandoned or work thereof is discontinued for a period exceeding 60 days, or if a change occur in the ownership of a mine, returns required under sub-regulation 1 shall submit within 30 days of abandonment or change of ownership or within 90 days of discontinuance as the case may be. अगर माइंस अबेंडन किया जाता है और डिसकंटिन्यू किया जाता है 60 दिन से ज़्यादा और ओनरशिप का चेंज होता है, उस केस में अबेंडेंट या ओनरशिप चेंज होने से 30 डेज के अंदर और डिसकंटिन्यू होने से 90 डेज के अंदर ये फॉर्म एनुअल रिटर्न भेजना है. Provided that the chief inspector may, by an order in writing and subject to such condition as he may specify therein, allow such returns to be submitted up to any date not later than 20th day of February in every year following that to which they relate. इसमें चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे सकते हैं रिटर्न्स को लेटर डेट में सबमिट करने का 20 फरवरी के अंदर. Provided further, nothing this sub-regulation shall be deemed to authorize to submission of any return later than 20th day of February in year following that to which it is related. बीस फरवरी तक ये रिटर्न सबमिट करना है, इससे ज़्यादा डिले नहीं करना है. Notice of abandonance or discontinuance. When it is intended to abandon a mine or to discontinue working thereof for a period exceeding 4 months, the owner, agent, or manager shall, not less than 30 days before such abandonment or discontinuance, give to the chief inspector and the regional inspector a notice stating the reasons for the purpose of abandonment or discontinuance and the number of persons likely to be affected thereby. Provided that in case of a mine or part thereof, to which regulation 142 applies, notice as aforesaid shall also given whether it is intended to abandon a district or part of the mine or discontinue working thereof for a period exceeding 4 months. Provided further that when, on account of unforeseen circumstance, the mine or part as aforesaid is abandoned or discontinued before the notice has given, or when without previous intention the discontinuance extend beyond a period of 4 months, the notice shall given forthwith. जब 30 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए डिसकंटिन्यू होना है, उस पीरियड में ये नोटिस भी देना है. और कोई कंडीशन अनफोर्सन कंडीशन में अगर माइंस 30 डेज से ज़्यादा ये 4 मंथ से ज़्यादा डिसकंटिन्यू होता है, उस केस में भी नोटिस देना है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग contains in clause A, where it is intended to abandon or discontinue for more than 4 months any working below ground over which is situated any property vested in the government or any local authority or any railway or building or permanent structure not belong to owner, the owner agent or manager shall not less than 30 days before the date of such abandonment or discontinuance give notice
of his intention to Chief Inspector and Regional Inspector. When a mine or part thereof has been abandoned or working thereof has been discontinued over a period exceeding 4 months, the owner, agent, or manager shall, within 7 days of abandonment or the expiry of said period, give Chief Inspector, the Regional Inspector, and the District Magistrate notice in Form A of first schedule. Next, notice of reopening. When it is intended to reopen a mine after abandonment or after discontinuance for a period exceeding 4 months, the owner, agent, or manager shall not less than 30 days before resumption of mining operation give the chief inspector, the regional inspector, and the district magistrate notice in Form 1 of first schedule. रीओपन करने से पहले 30 डेज पहले फॉर्म 1 में नोटिस देना है. Provided that in case of a mine or part thereof to which regulation 142 applies, notice as aforesaid shall also given whenever it is intended to reopen a district or part of the mine after abandonment or after discontinuance for a period exceeding 4 months. यहाँ पे रेगुलेशन 142 अप्लाई होता है. वहाँ पे ये नोटिस देना है अगर कोई माइंस में कोई पार्ट या डिस्ट्रिक्ट रीओपन करना है अबेंडमेंट के बाद. दैट इज गैशी माइंस जहाँ पे है उस गैशी माइंस के लिए अगर कोई पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी ओपन होता है, पार्ट ऑफ द माइन या डिस्ट्रिक्ट भी ओपन होता है, तो उसके लिए भी ये इंफॉर्मेशन फॉर्म में देना है. When a mine or part, as aforesaid, has been reopened, the owner, agent, or manager shall forthwith communicate the actual date of reopening to Chief Inspector and Regional Inspector. Actual date इसका भी इन्फॉर्म करना है. Change of ownership and address etc. When a change occurs in the name or ownership of a mine or the address of owner, the the owner, agent, or manager shall, within 7 days from the date of change, give the chief inspector and regional inspector a notice in Form 1 of first schedule. अगर माइंस का नेम या ओनरशिप में या ओनर का एड्रेस में कोई चेंजेस होता है, उस केस में भी 7 डेज के अंदर फॉर्म 1 में ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा इंफॉर्मेशन देना है चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को. Provided that where the owner of mine is a firm or other association of individual, changes of any partner in case of firm, of any member in case of association, of any director in case of public company, or any shareholder in case of private company, shall also intimate to the chief inspector and the regional inspector within 7 days from the date of the change. When the ownership of mine is transferred, previous owner or his agent shall make over the new owner or his agent within period of 7 days of the transfer of ownership all plans, section, report, register and other records maintained pursuance of the Act and of the regulation, a order made thereunder, and all correspondence relating to the working of the mine relevant thereto, and when the requirements of this clause have been duly complied with, both previous and new owner or their representative agents
shall forthwith send the Chief Inspector and Regional Inspector a detailed list of the plan, section, reports, registers, and other record have been transferred. जब ओनरशिप चेंज होता है तो प्रीवियस ओनर और का एजेंट को 7 दिन के अंदर जो रिक्वायर्ड प्लान सेक्शंस रिपोर्ट रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड जो माइंस एक्ट के लिए एंड रेगुलेशंस के लिए एंड इसका अंडर में जो ऑर्डर है उसके लिए चाहिए, ये सारे हैंड ओवर करना है और बोथ प्रीवियस एंड न्यू ओनर और उनका रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स के द्वारा इसको डिटेल चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर के पास डिटेल लिस्ट भेजना है. When any new appointment is made of agent, manager, assistant manager, underground manager, surveyor, or engineer, if any, or when employment of any such person is terminated, or any such person leaves said employment, or when any change occurs in address of any agent or manager, the owner, agent, or manager shall, within 7 days from the date of such appointment, termination, leave, or change, give Chief Inspector and Regional Inspector a notice in Form 1 of first schedule. नया अपॉइंटमेंट होने से या कोई चेंज होने से या लीव ट्रांसफर होने से जिसमें एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, सर्वेयर और इंजीनियर, इन लोगों से कोई चेंज होने से चेंज होने का 7 डेज के अंदर फॉर्म ऑन में चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर के पास इंफॉर्मेशन भेजना है. अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट. द ओनर ऑफ माइन shall submit in writing to chief inspector and the regional inspector a statement showing the name and designation of every person authorized to act an agent on behalf of the owner of the mine in respect of management, control, supervision, or direction of the mine. The statement shall also show responsibility of every such person and the matter in respect of which he is authorized to act on behalf of the owner of the mine. The statement aforesaid shall be submitted within 1 month from the date of coming into force of Metalliferous Mines Amendment Regulation 1985 in case of mine already opened or reopened as case may be, and other case within 1 month from the date of opening or reopening the mine. Any change, addition, or alteration in the name or other particulars of the aforesaid statement shall be reported in writing to the chief inspector and the regional inspector within 7 days from the date of such change, addition, or alteration. एजेंट की नियुक्ति और चेंज के बारे में मिडिल क्लास माइंस रेगुलेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन जो 1985 आने के पहले जो हुआ वो 30 दिन के अंदर और बाद की जब नया नियुक्ति होता है उसमें 7 डेज के अंदर चेंज एडिशन या डिलीशन अल्टरेशन होने से 7 डेज के अंदर ये चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर्स को इन्फॉर्म करना है. नोटिस ऑफ एक्सीडेंट. When there occurs in or about a mine an accident causing loss of life or serious bodily injury in connection with mining operation, exploration or ignition, spontaneous heating or outbreak of fire, appearance of smoke or other indication of heating or outbreak of fire on lux or noxious gases, an occurrence of inflammable gas in a mine into which regulation on 42 does not apply, eruption of water, rock burst in walking below ground, premature collapse of any part of walking, any accident due to explosion, explosives, breakage or fracture of rope, chain, headgear, pulley, axle, bearing thereof, or other gear
whose persons are lowered or raised, and overwhelming in case of other means of conveyance while men are being lowered or raised, breakage, fracture of any essential part of winding engine, crankshaft, coupling, bearing, gear, claws, drum shaft, or failure of emergency brake, a bursting of any equipment containing steam, compressor, air, or other substance at high pressure, or a breakage or failure of any essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons made under endangered. The owner, agent, or manager shall forthwith inform the regional inspector about the occurrence of by telephone or express telegram or by special messenger, and shall also within 24 hours of every such occurrence give notice thereof in form 4A of first schedule to district magistrate, chief inspector, and regional inspector, and shall simultaneously exhibit a copy of notice on a special notice board outside the office of the mine, and shall ensure that the notice is kept on the board in legible condition not less than 14 days from the date of such exhibition. When an accident causing loss of life or serious bodily injury occurs in or about a mine in connection with generation, storage, transmission, transmission, supply, or use of electrical energy, the owner, agent, or manager shall also forthwith inform electrical inspector of mines by telephone, express telegram, or special message. If death results from any injury already reported as serious under sub-regulation 1, or if any injury other than serious injury becomes serious, the owner, agent, or manager shall within 24 hours of his being informed the same give notice thereof to district magistrate, chief inspector, and the regional inspector. फॉर्म 4A में जो इन्फॉर्म करना है वो फॉर्म निशान जो दिया गया था उसमें अगर कोई चेंजेस होता है, जैसे कोई सीरियस इंजरी अगर डेथ में कन्वर्ट होता है या कोई नॉन सीरियस इंजरी अगर सीरियस में कन्वर्ट होता है, तभी 24 आवर्स में इन्फॉर्म करना है. In respect of every person killed or injured as above, the owner, agent, or manager shall send the chief inspector particulars in Form 4B and 4C of first schedule within 7 days of occurrence or 15 days of injured persons returning to duty as case may be. फॉर्म 4B में एंड 4C में डिटेल्स भेजना है एवरी पर्सन जो मारा गया या इंज्योर्ड है, सीरियसली इंज्योर्ड है, उनके बारे में. नोटिस ऑफ डिजीज where any persons employed in a mine contract any disease notified by central government in official gazette, the owner, agent, or manager shall within 3 days of his being informed of the disease send notice thereof in Form 5 first schedule to district magistrate, chief inspector, the regional inspector, and inspector of mines medical. अगर नोटिफाइबल डिजीज कोई काउंटर होता है उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर 3 दिन के अंदर उस डिजीज के बारे में फॉर्म 5 के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को इन्फॉर्म करेंगे. इसमें हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन चेंजेस इन द ओनर ऑफ माइन इन a firm or other association of individual, a change of any shareholder
in case of a private company shall also be intimated to chief inspector and the regional inspector within days of the date of changes. 6 days, 8 days, 7 days, 9 days, 14 days. Correct answer is 7 days because रेगुलेशन 8 में बताया हुआ है चेंज के केस में फॉर्म ए में फॉर्म 1 में 7 days के अंदर इन्फॉर्म करना है. नेक्स्ट, when the owner of a mine is a firm or other association of individual, form A has to be submitted in case of change of ownership. Only when partner in case of firm or any member in case of association. Only it is director in case of public company. Only if it is any shareholder in case of private company. All of the above, none of the above. Correct answer is all of the above. In regulation 8, you can see it. When injury or death more than one persons take place, Form 4B shall be sent for entire group of the injured or death in one form, not more than 3 persons in on Form 4B, to be sent in a special form with covering letter separately in respect of every persons injured or killed, not more than 2 persons in one Form 4A. Correct answer is separately in respect of every persons or killed. In regulation 9, we can see that. Thank you. आप नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर योर